Rahim. Okay, students, we are in our third session of the reading of Reflections on the Reawakening East. And you remember that in the first two sessions, Bertrand Russell pointed out that by reflection on the Reawakening East, he meant a change that is taking place in the eastern side of the world, that is in Asia and the other countries, that they are now getting freedom from the Western imperialism, and after this freedom they also want to become as developed as Europe is. And also he points out some of the mistakes that he believes that the Asian countries should not do. He says that Asian countries should not copy the mistakes that the Western countries had been doing, that of usurping the rights, usurping the freedom of their fellow nations, the weaker nations of the world. And he also points out that these new Asian countries should have to adopt industrialization as quickly as possible. And he also believes that Western countries should help them in this process, because in this way these countries will become prosperous and developed, and as a result of that the world will become a peaceful place to live in. He also had talked about the union of Moscow and Peking, that it is the alliance of Moscow and Peking that is a new threat to the world, and he believes that these eastern nations must not succumb to the new and virulent form of imperialism, that is Russian communism. He believes that the world is divided into two blocks, and these newly freed Asian nations must not join either of the blocks. Rather they should form a block of their own, so that as a result of the Third World War, some portion of the humanity may have a chance of saving itself. Let's move forward and see what other ideas he has about this change scenario of the world. He says that it is of course a trifle absurd to speak of Asia as a unity, and only opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. It is a trifle absurd. Trifle absurd means बिल्कुल ही फजूल बात, बिल्कुल ही बेकार सी बात. Absurd means fuzul, trifle means मामूली सी बात. So it is of course a trifle absurd to speak of Asia as a unity. That means to think that Asian countries may have a kind of unity that the West has is impossible. Why? He will point out the reason of this opinion in the later lines. And only the opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. Asia contains half the population of the world and at least three very distinct civilizations. Contains means शामिल होना. So Asia contains half the population. Asia के अंदर है. Contains means Asia के अंदर half the population of the world and at least three very distinct civilizations. Distinct means नुमाया, बहुत ही prominent. So there are three very distinct civilizations in Asia. तीन बहुत ही distinct civilizations हैं एशिया के अंदर, तीन तहजीबें, that of Islam, that of India and that of China. That means these are the three very distinct civilizations and they all are different. They just can't work in unison. ये तीनों जो हैं इकट्ठे एक जगह पर जो है किसी एक प्लेटफॉर्म पर जो है उस यूनिटी के साथ जमा नहीं हो सकते जिस यूनिटी के साथ जो है वेस्टर्न नेशंस जमा हो पाती हैं. So these differ from each other. ये सब they all are different from each other just as much as they differ from the civilization of Christend. Christend means the civilization of the Europe, because most of the European countries are Christian countries and majority of the people are Christian in Europe. So that is why he says that as all these nations are different from the Christian countries, so similarly they are also different from each other as well, and there is not the faintest reason, zara sa bhi imkaan nahi hai. Faintest means zara sa. So there is not the faintest reason to expect them all to act in unison. Unison means इत्तेहाद. So they cannot act कि ये साथ मिलकर जो है नहीं चल सकते, ये साथ मिलकर इत्तेहाद से नहीं चल सकते जैसे कि वेस्टर्न नेशंस चल सकती हैं. What is to be hoped is not an endeavor after cultural or political unity, but a determination to uphold independence at home and to respect it elsewhere. What is to be hoped? किस चीज की उम्मीद रखनी चाहिए? Not an endeavor. Endeavor means to make an effort, कोशिश करना.
जद्दोजहद करना. So one should not endeavor after cultural or political unity. That people should not try to create cultural or political unity कि कोई कल्चरल या पॉलिटिकल यूनिटी जो है उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट अ डिटर्मिनेशन टू अपहोल्ड इंडिपेंडेंस एट होम. इन कौमों को क्या करना चाहिए? दे मस्ट हैव अ डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मींस पक्का इरादा. टू अपहोल्ड इंडिपेंडेंस एट होम, कि वो अपनी आजादी को अपने घर में जो है वो बरकरार रखें. अपहोल्ड का मतलब बरकरार रखना, इंडिपेंडेंस एट होम, एंड टू रिस्पेक्ट इट एल्सवेयर, एंड और दूसरों की आजादी का एहतराम करें. व्हेन आई स्पीक ऑफ इंडिपेंडेंस, आई एम नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ पॉलिटिक्स बट आल्सो ऑफ culture. So when I speak of independence, I'm not thinking only of politics but also of culture. There is a great danger of too much cultural uniformity. Too much cultural uniformity. Uniformity means एक जैसा हो जाना. So there is a danger of too much cultural uniformity as the world actually is coming closer, and most of the Asian nations are highly influenced by the culture of the Europe. So there is a great danger of too much cultural uniformity. कि हो सकता है कि दुनिया में एक जैसा कल्चर जो है वो कौमों का हो जाए. No great civilization has ever been cosmopolitan. Cosmopolitan का मतलब भी जो है एक जैसा होना, कि कोई भी अजीम सिविलाइजेशन जो है वो कभी भी कॉस्मोपॉलिटन नहीं रही है. हमेशा दुनिया में जो है रंगारंगी रही है. मुख्तलिफ रिलीजन्स को, मुख्तलिफ अकायद को और मुख्तलिफ तरीके से लाइफस्टाइल गुजारने वाले लोग दुनिया में रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन, बिकॉज इट एक्चुअली एड्स to the color and to the diversity of this world. That is the real beauty of this world, according to Bertrand Russell. So he is against cultural uniformity, and he believes that all the nations should preserve their culture, because cosmopolitanism is not the sign of a great culture. Modern cosmopolitanism is based upon science and machinery. These are the two most important factors that make the culture of modern times same everywhere: science and machinery. These two new elements in civilization have been superimposed upon older cultures and have shown themselves such powerful solvents that they tend to put an end not only to what was bad but also to what was good in the culture of the past. Because science and machinery are the two elements that actually have come forward after the 16th century with the development of science and technology in the world, and they have been superimposed. Superimposed means थोप देना किसी चीज के ऊपर. They have been superimposed upon older cultures, और ये जो है पुराने कल्चर्स के ऊपर जो है इनको जो है ये हावी हो गए हैं, and have shown themselves such powerful solvents. Solvents का मतलब होता है, solvent means हल कर देना. So they have proved so powerful solvents that they tend to put an end. Put an end का मतलब खत्म कर देना. So they tend to put an end not only to what was bad but also to what was good in the culture. So these two elements, science and machinery, are so powerful solvents, according to Bertrand Russell, that after being superimposed upon the ancient cultures, old cultures, they are putting an end to not only what was bad but also to what is good. So he believes that the good things of the culture should remain there. They should not be changed. Yes, the bad things, that means the superstitions that people have in their culture, science and machinery should put an end to them, but not to the good things, as respect of the elders, love of friends, love of family life, and all the good things that the scriptures, the holy books say to people to live life. He believes that those good things should remain intact. Intact means mahfuz. They should not be changed. But what is happening, that these two elements in modern cosmopolitanism, science and machinery, they are putting end to not only what was bad but also what is good. It must be admitted that they are necessary and they are good if rightly controlled, but it need not be admitted that adulation of them should sweep away everything else.
Okay, so these two elements are very good if they are rightly controlled. Rightly controlled means अगर इनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाए, but it need not be admitted that adulation of them should sweep away everything else. लेकिन इस चीज को मानने की जरूरत नहीं है. It need not be admitted. Admit का मतलब किसी चीज को मानना, किसी चीज को तस्लीम कर लेना. Like that means you must not admit it. आप इस चीज को कभी तस्लीम ना करें कि आप उसकी एड्यूलेशन इतनी करें. एड्यूलेशन मीन्स किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशामद करना, किसी चीज को हद से ज्यादा वैल्यू देना, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा जो है बुलंद और बरतर साबित कर देना. He is of the view that science and machinery should not be given too much adulation, because the adulation of them should sweep away everything else. Sweep away means खत्म कर देना. So the adulation of these science and machinery should not sweep away the good things in the human culture as well. If human life is to be tolerable, it cannot be wholly mechanized. That means if human life is to be enjoyable, tolerable से यहाँ पर मुराद ये कि काबिल बर्दाश्त. That means human life should not be wholly mechanized. Wholly means मुकम्मल तौर पर. It should not be mechanized. मानी इंसानों की जिंदगी जो है वो मशीनों की तरह नहीं हो जानी चाहिए. हर चीज को साइंस के ऊपर, साइंस की बुनियाद पर ही नहीं परखना चाहिए, बल्कि it must continue to contain poetry and music and art and love and the simple joys of life. So these are the things that according to Bertrand Russell actually make human life beautiful. So it must not, so it must continue to contain, it must continue means जारी रखना, कि इसके अंदर जारी रहना चाहिए. क्या चीज जारी रहना चाहिए? Poetry and music and art and love and simple joys of life. I mean, these are the things that actually make life beautiful, not the machines, not the things that are produced by machines that make life beautiful, but when people live together, when people respect each other, the family life, the friends and the simple joys of life, children, these are the things that make life beautiful. So these are the things that tend to be forgotten in a machine age. So in machine age, these things lose their importance. Poetry, music, art and love and simple joys of life, they lose their importance. They are forgotten in a machine age. They are forgotten in the communist philosophy. Or communist philosophy में भी जो है, he believes that these things are forgotten and they are not given sufficient weight by many men who think themselves in the forefront of progress. Forefront means आगे वाला मुहाज, सबसे आगे. So they are not given sufficient weight. Sufficient weight means here weight means importance. So they are not given importance by many men who think themselves in the forefront of the progress. वो लोग जो कि तरक्की के अलमबरदार हैं, they do not give importance to these things, to these simple joys of life, love, poetry, art and simple joys of life. So he says that I should like to hope that Reawakening Asia will remember these elements in the good life. So these new nations, they should give importance to these things in their life as well. Machines are not the only thing that make life beautiful. In fact, life is made beautiful when people respect each other and they live and love each other. With each other. Okay, so I should like to think that rivalries and the struggles for national independence will not be so severe as to compel militaristic mechanization. I should like to think, मैं इस चीज के बारे में सोचता हूं या मैं इस चीज की तवक्को रखता हूं that rivalries means मुकाबला and struggle for national independence. ये जो मुल्क अभी भी कुछ हैं जो कि अपनी आजादी की जद्दोजहद कर रहे हैं और आजाद होना चाहते हैं, it will not be so severe as to compel militaristic mechanization, कि ये इतना ज्यादा ना बढ़ जाए. It should not be so severe as to compel. Compel means मजबूर करना. So it should not compel militaristic mechanization. Militaristic mechanization का मतलब क्या है कि साइंस का इस्तेमाल मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए. मिलिट्रिस्टिक मींस मिलिट्री पावर. सो मिलिट्रिस्टिक मैकेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ जो है जंग और हथियार बनाने के लिए साइंस ना इस्तेमाल हो, बल्कि साइंस और मशीनरी को इस्तेमाल होना चाहिए टू मेक ह्यूमन लाइफ इजी and lovely to live. Okay, so he says that I should say to the reawakening nations of Asia, your independence will not be very difficult to preserve, especially in view of the division of the rest of the world into hostile camps.
So I should say मैं I would like to tell to the reawakening nations, ये आजाद होते हुए मुल्क जो हैं, reawakening means आजाद होते हुए मुल्क जो हैं एशिया के, I would like to say them, your independence will not be very difficult to preserve. Preserve means बरकरार रखना, कायम रखना. So you will not find it difficult to preserve your independence, especially in view of the division of the rest of the world into two hostile camps. Especially खास तौर पर इस चीज के पेश नजर, इन व्यू ऑफ द का मतलब क्या है, इस चीज के पेश नजर दैट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू हॉस्टाइल कैंप्स. दुनिया जो है वो दो जारहाना कैंप्स के अंदर जो है वो तकसीम है, दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम है. बट what will perhaps be more difficult will be to refrain from copying the mistakes of the West. So again he is reminding them that they must not copy the mistakes of the West. Refrain means parhez karna. So they should, it will be more difficult to refrain from copying the mistakes of the West. The West throughout the last 5 centuries has displayed extraordinary energy which has taken many forms, some good and some bad. So West throughout the last 5 centuries has displayed extraordinary energy. Extraordinary energy means कि जबरदस्त एनर्जी का वेस्ट ने जो है मुजाहिरा किया है. डिस्प्ले मींस मुजाहिरा करना. एनर्जी विच हैज टेकन मैनी फॉर्म्स, सम गुड एंड सम बैड. ये एनर्जी जो है इसकी बहुत सारी शक्लें हमारे सामने आई, सम गुड एंड सम बैड. इट हैज एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड फ्रॉम पोल टू पोल. इसने पूरी दुनिया को जो है खंगाल लिया है, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो है इट हैज एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड. एक्सप्लोर का मतलब खंगालना, तलाश करना, जानना. सो इट हैज नोन द वर्ल्ड फ्रॉम पोल टू वर्ल्ड. इट हैज लर्न्ड the secrets of atoms and stars, and it has learned the secrets of atoms and stars. कि अब जो है वेस्ट जो है एटम्स और स्टार्स के सीक्रेट्स भी जान चुका है. It has discovered how to produce such an abundance of necessaries and comforts as previous ages would have thought unimaginable. So it has discovered how to produce. ये जान चुका है उस राज को कि कैसे जो है abundance का मतलब फरावानी. किन चीजों की? वो चीजें जो कि जिंदगी को आसान बनाती हैं, उन चीजों की फरावानी जो है वो कैसे पैदा की जाए. That previous ages would have thought unimaginable. जो पुरानी कौमें जो थी और जो पुराने जमाने जो थे उनके लिए जो उनकी सोच से भी बालातर थी ये चीजें. अनइमेजिनेबल का मतलब होता है वो बात जो कि कोई सोच भी ना सके, जो कि किसी के तसव्वुर में भी ना आ सके. बट ऑल दिस which might have ministered to human happiness. Ministered का मतलब इंतजाम करना. But all this which might have ministered to human happiness, और कि ये सारी साइंस और मशीनरी और ये सारी एनर्जी which should have ministered to human happiness, जिसको जो है इंसानों की खुशियों का इंतजाम करना चाहिए था, has been vitiated by one fatal fault. तो ये जो है खराब हो गई. विशिएट का मतलब किसी चीज का खराब हो जाना, किसी चीज का तबाह हो जाना. सो ऑल दिस हैज बीन विशिएटेड बाय वन फैटल फॉल्ट. फैटल फॉल्ट मींस मोहलिक गलती, जानलेवा गलती. तो एक फैटल फॉल्ट की वजह से ये सब जो है खराब हो गया. और वो फैटल फॉल्ट क्या है? द लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बीइंग्स. सो द लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बीइंग्स, कि दूसरे इंसानों पर जो है हुक्मरानी या दूसरे हुक्मरान इंसानों पर गलबा जो है, ये एक ऐसा फैटल फॉल्ट था जिसकी वजह से जो है ये खत्म हो गया, यानी कि इसका फायदा ना हो सका इंसानों को. Africans and Asians alike have been tortured and oppressed by the energetic ingenuity of Western conquest. Africans and Asians, क्योंकि अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे मुल्क जो थे, सारे ही मुल्क तकरीबन जो थे वो वेस्टर्न पावर्स के, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के कब्जे में चले गए थे. तो यहां पर वो कह रहा है कि अफ्रीकन्स एंड एशियंस अलाइक मींस एक तरह से, हैव बीन टॉर्चर्ड, उनको एक ही तरह से जो है तकलीफें दी गई हैं, गुलामी में रखा गया है. एंड ऑप्रेस्ड बाय द एनर्जेटिक इंजेन्युइटी ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट. वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट मींस मगरिब की फतूहात. इंजेन्युइटी मींस नई नई चीजें बनाने की सलाहियत. So energetic ingenuity of Western conquest. If the world is to be happy, energy and ingenuity must no longer be expended in the exploitation of
those who have less of these qualities. So if the world is to be happy, अगर दुनिया ने जो है वो एक खुशगवार जगह बनना है, तो ये एनर्जी और ये इंजेन्युइटी कि ये जो सलाहियत है नई नई चीजें बनाने की और नई नई साइंसी दरियाफ्तें करने की, इट मस्ट नो लॉन्गर बी एक्सपेंडेड, तो इसको जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. नो लॉन्गर मीन्स मजीद नहीं होना चाहिए इस्तेमाल इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दोज हु हैव लेस ऑफ दीज क्वालिटीज, उन लोगों को एक्सप्लॉयट करने में जिनके पास ये क्वालिटीज कम है, जो कि इतने ज्यादा साइंस के लिहाज से और मैकेनाइजेशन के लिहाज से जो है इंजेन्युइटी नहीं है, जिनके पास एनर्जी नहीं है, तो उनको जो है उनकी एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उनकी कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए इस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. मैनकाइंड मस्ट लर्न अ डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंसानों को जो है एक दूसरे का अदब, एक दूसरे का एहतराम जो है उसकी डिग्री उसको सीखना चाहिए. अ डिग्री के कुछ जर्रा जो है उनके अंदर पैदा होना चाहिए ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विच हैज नेवर हिदरटू एग्जिस्टेड, जो कि अब तक जो है मौजूद नहीं रहा है. हिदरटू मींस अब तक एंड एग्जिस्टेड मींस मौजूद रहा. परहैप्स some, at least, of the nations of Asia will have learned this lesson from their sufferings at the hands of ingenuous despots. Perhaps the Asian nations will have learned this lesson. He believes that Asian nations might have learned कि उन्होंने ये सबक सीख लिया होगा from their sufferings, कि जो जिस तरीके से उन्होंने सफर किया, जिस तरीके से वो दुखों में तकलीफों में मुब्तला हुए, from the hands of ingenuous despots, उनके जो आका थे, despots means जालिम हुक्मरान, तो उनके जो ingenuous यानी कि ज़हीन और जालिम हुक्मरान जो थे, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा कि दुनिया कैसे जो है इस किस्म की टेंडेंसी से खराब हो जाती है और लोगों की जिंदगी अजाब हो जाती है. सो परहैप्स ऑन द अदर हैंड दे विल ओनली हैव एक्वायर्ड अ विश टू इमिटेट द रूथलेस mastodons who are bringing the west to disaster. So कह रहा है कि हो सकता है कि एशियन नेशंस might have learned this lesson, कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर उनके अंदर जो है एक विश पैदा हुई हो. एक्वायर का मतलब हासिल करना. टू इमिटेट द रूथलेस मास्टोडॉन्स, मास्टोडॉन्स जो थे पुराने दौर के जानदार जानवर जो कि बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह, तो कहता है कि या हाथी वगैरह बहुत पुराने दौर के बहुत बड़े बड़े, तो कहता है कि हो सकता है कि ये जो मास्टोडॉन्स जो कि उनके ऊपर अभी हुकूमत करके गए यानी कि यूरोपियन कौमें, तो उनसे उन्होंने उनकी रूथलेसनेस से, उनकी बेरहमी से उन्होंने सीखा हो कि वो भी उनको इमिटेट करेंगे. हु आर ब्रिंगिंग द वेस्ट टू डिजास्टर, जो कि और ये कौमें जो है वो समझता है कि वेस्ट को तबाही की तरफ ले जा रही हैं. आई हैव नॉट द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, कहता है कि मैं नहीं प्रोफेसी कर सकता, मैं नहीं कोई पेशेंट गोई कर सकता. प्रोफेसी का मतलब प्रोफेसी मींस पेशेंट गोई करना. सो आई हैव नो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, कि मेरे पास जो है पेशेंट गोई करने का कोई मलका नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है. एंड आई कैन नॉट प्लम द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन फॉली, और ना ही मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इंसानों ने जो गलतियां की हैं उनके क्या क्या नताइज बरामद होंगे. प्लम का मतलब क्या होता है? किसी चीज की गहराई में जाना, और डेप्थ का मतलब होता है गहराई. आई कैन नॉट प्लम द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन फॉली, बट व्हाइल देयर इज अनसर्टेनिटी, होप एंड एप्रीहेंशन आर इक्वली रैशनल. ही सेज दैट देयर इज अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्या है? कि these nations are getting free, they are getting their freedom now, and there is a possibility that they may imitate their ruthless mastodons. लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दुनिया में अमन और भाईचारा जो है वो पैदा करने का सबब बने. So while there is uncertainty, अगरचे अनसर्टेनिटी है, hope and apprehensions are equally rational, तो इसमें जो है इंसान को जो है होप यानी कि उम्मीद भी रख सकता है और खौफ और खदशे भी रख सकता है. दे बोथ आर इक्वली रैशनल, ये दोनों जो हैं अकल के मुताबिक हैं. एंड होप इज मोर लाइकली टू बी बेनिफिशियल, और पुर उम्मीद रहना जो है वो ज्यादा अच्छा होता है. कितनी अच्छी बात कर रहा है वो, दैट आप जितने भी बुरे हालात हो उसमें पुर उम्मीद रहना इंसान के लिए ज्यादा अच्छा होता है. मायूसी हमेशा जो है तबाहियों को और ज्यादा बढ़ाती है. सो होप इज मोर लाइकली टू बी बेनिफिशियल. लाइकली का मतलब कई दफा मैंने आपको बताया, इम्कान होना, कि उम्मीद का ज्यादा इम्कान है कि वो फायदामंद साबित हो. सो लॉन्ग देयरफॉर एज होप रिमेन्स पॉसिबल, तो जब तक
उम्मीद की जा सकती है। आई शैल कंटिन्यू टू होप, और मैं उम्मीद रखूं, लिहाजा मैं उम्मीद करता रहूंगा। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ माई होप विल बी सेंटर्ड इन द ईस्ट, और मेरी उम्मीदों का बड़ा मरकज जो है अब ईस्ट है।